Hello, everyone. Welcome to the YouTube revision session for performance management. मैं आपकी फैकल्टी जानकी पांचाल एंड ये है डे 2 रिविजन का, राइट? कल हमने क्या पढ़ा था? एक क्विक रीकैप ले लेते हैं। कल हमने थोड़ी स्ट्रैटेजीज सीखी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर में क्या चैलेंजेस आते हैं वो देखे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर को कैसे हैंडल करना है वो देखा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कल थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे, राइट? और ये तीनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने इस बार के यूट्यूब रिविजन के लिए सिलेक्ट करे हैं वो सारे के सारे ही आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं, एंड विथ अ मिक्स ऑफ थियोरी एंड कैलकुलेशन बोथ, राइट? सो कल हमने उसका थियोरी अंडरस्टैंड किया, उसके लॉजिक्स अंडरस्टैंड किए कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्यों है, डिविजनल परफॉर्मेंस की क्या जरूरत है, ऑपरेशनल एंड प्लानिंग वेरिएंसेस कहाँ पे यूज होते हैं, राइट? तो हमने कल वो देखा था। आज हम क्या करेंगे? आज हम ईच टॉपिक जो हमने कल किया था उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली ये एग्जाम में से उठाए गए क्वेश्चन नहीं है, मैंने एसीसीए के स्टडी हब से लिए हुए हैं, एंड मैंने आपको कल भी बताया था कि एसीसीए का स्टडी हब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एसीसीए का स्टडी हब आपको अपनी एग्जाम्स के क्वेश्चंस की तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, राइट? अगर आप आज पहली बार मेरा यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं जो सेकेंड डे का है, तो आप प्लीज कल का वीडियो आईआईसी लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, एंड आपको इसका ट्रेल मिल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टॉपिक नंबर 1 से, जो था ट्रांसफर प्राइसिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आपने कल का वीडियो थोड़ा याद नहीं है, तो मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ ट्रांसफर प्राइसिंग का। ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों करते हैं? जब एक कंपनी की 2 डिविजन होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल डिविजन ए और डिविजन बी। अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को मटेरियल सप्लाई करता है या सर्विसेज सप्लाई करता है, तो वो इंटरनली क्या चार्ज करेगा, एंड जो चार्जेस लगते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस, राइट? इसमें 2 मेथड्स होते हैं, मार्केट बेस्ड एंड कॉस्ट बेस्ड। मार्केट बेस्ड तो बड़ा सिंपल है, जो भी मार्केट में आप डिवीजन ए जो भी मार्केट में प्राइस चार्ज कर रहे हैं वही इंटरनली चार्ज कर ले। और कॉस्ट बेस्ड एक अलग स्ट्रैटेजी है जहाँ पे स्पेयर कैपेसिटी और फुल कैपेसिटी का लॉजिक आता है, राइट? अगर स्पेयर कैपेसिटी है तो सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट चार्ज करें, फुल कैपेसिटी है तो मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चार्ज करें। तो ये हमारा एक थियोरी का मैंने आपको ब्रीफ दे दिया। अब फोकस करते हैं इसकी सम्स पे कि कैसे टाइप के सम्स आते हैं, ठीक है? तो लेट्स सी। आई एम श्योर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। मैं एक मिनट। राइट, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। एबल एंड बेकर, जैसे मैंने कहा एसीसी के स्टडी हब से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, तो जैसे वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप सारे के सारे ही प्रैक्टिस करना। और मैं प्रैक्टिस करने की बात कर रही हूँ तो टाइप करना है एक्सेल शीट पे, ना ही देख जाना है, ठीक है? उनको टाइप करना है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, तो हम कोई भी इसमें लूज एंड नहीं छोड़ेंगे, राइट? ओके, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टॉपिक नंबर 1, ट्रांसफर प्राइसिंग, एबल एंड बेकर। क्वेश्चन क्या कहता है? The transfer pricing system operated by a divisional company has the potential to make a significant contribution towards the achievement of corporate financial objectives. Transfer pricing, divisional company, contribution, achievement of corporate financial objectives. State the potential benefits of operating transfer pricing system with a divisionalized company. ट्रांसफर प्राइसिंग आप कहाँ यूज कर सकते हो?
ट्रांसफर प्राइसिंग आप डिविजनलाइज्ड कंपनीज में ही यूज कर सकते हो, राइट? डिविजनलाइज कंपनीज में ही ट्रांसफर प्राइसिंग यूज होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, जो पूछ रहा है कि बेनिफिट्स क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग के, राइट? कल अगर आपने थियोरी मेरी देखी है तो वेरी गुड, नहीं देखी है तो कल का वीडियो प्लीज देख लीजिए। उसमें मैंने आपको इसके सारे बेनिफिट्स बताए थे। एंड अभी हम एक क्विक रिकैप करते हैं। जब इंटरनली एक डिवीजन दूसरे डिवीजन से अगर कुछ प्रोडक्ट्स खरीदता है या बेचता है, तो कंपनी का ओवरऑल गोल कॉन्ग्रुएंस होता है। कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, राइट? कंपनी में डिविजनल मोटिवेशन मिलता है। These are some important benefits, right? Now, जब भी, अब मैं आपको ऑब्वियसली आंसर दिखा रही हूँ, लेकिन जब भी आप खुद से पेपर सॉल्व करो और आप आंसर्स देखो, राइट? तो जो भी सैंपल आंसर्स है सीबीई प्लेटफॉर्म पे होगा या फिर एसीसीए के प्रैक्टिस हब पे होगा, तो दे आर टू गुड टू बी ट्रू, राइट? ऑलवेज उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश मत करो, उसको मग मत करो, उसको बाय हार्ट मत करो, ठीक है? उसको समझो, लॉजिक को समझो एंड लॉजिक के हिसाब से एग्जामिनेशन में बैठो, राइट? क्योंकि अगर बाय हार्ट करने जाओगे ना, तो चांसेस है कि इतना सारा डेटा बाय हार्ट कर पाओगे नहीं। एंड दूसरा एक डिसएडवांटेज ये बन जाएगा कि अगर वो क्वेश्चन आया और आप कुछ भी उसमें से भूल गए, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, राइट? ऑब्वियसली लक्षा के क्लास में मैंने बताया था कि देर आर सर्टन थिंग्स जो बाय हार्ट करनी भी होती है, बट डेफिनेटली ये तो नहीं करना है, ठीक है? लेट्स लुक एट द आंसर। अचीविंग ग्लोबल एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट ऑप्टिमली, राइट? बिकॉज अगर एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को गुड्स दे रहा है, तो जो भी कंपनी ये डिवीजन अगर एक्सटर्नल से परचेज करता, तो वो अपने पार्ट ऑफ द इनकम बाहर दे देता। इंटरनली अगर टू वे परचेज या सेल हो रहा है, तो ये वाली प्रॉब्लम आती नहीं है। दूसरा, गोल कॉन्ग्रुएंस बिटवीन डिविजन्स एंड ग्रुप्स, राइट? सारे जो डिविजन्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, ग्रुप्स बना के रहते हैं। फॉस्टरिंग डिविजनल ऑटोनॉमी एंड लोकल डिसीजन मेकिंग, राइट? सब डिवीजन अपने अपनी ऑटोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं एंड अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आपको इंटरनली लेना है या एक्सटर्नली लेना है, या फिर अगर कुछ बार्गेन करना है, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट डिविजन्स कैन डू। Measurement of divisional financial performance via the generation of a recognized income figure. Provision of pricing signals that induce decisions to improve corporate profitability. Right? So these are some potential benefits of transfer pricing. 5 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आप 3 अच्छे पॉइंट्स भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, मोर देन इनफ हो जाएगा, राइट? पॉइंटर फॉर्म्स में ना लिखो तो बेहतर है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन का जो अंडरस्टैंडिंग या थियोरी पार्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, राइट? A company operates two divisions, एबल एंड बेकर, ठीक है? तो पहले तो हम, जैसे कल भी बताया था, क्वेश्चंस में होते हैं डिस्ट्रैक्टर्स, इसीलिए बेटर है कि क्वेश्चन को अपने आप से समझो, राइट? वो डिस्ट्रैक्टर से दूर रहो। फास्ट फास्ट क्वेश्चन पढ़ लो तो पढ़ो ही मत। अगर क्वेश्चन पढ़ना है तो ढंग से एक बार अच्छे से पढ़ो, लेकिन अगर फास्ट पढ़ के जाओगे तो उसमें से आउटपुट तो कुछ आएगा नहीं, टाइम अलग से वेस्ट होएगा। सो एबल एंड बेकर, उसमें से एबल है वो दो प्रोडक्ट्स बना रहा है, एक्स एंड वाई। सो ये भाई साहब बना रहे दो प्रोडक्ट्स, एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट एक्स इज सोल्ड टू एक्सटर्नल्स, ये एक्सटर्नल चला जाता है एट $42। द ओनली आउटलेट फॉर वाई इज बेकर। सो बेकर जो भी बना रहा है वो, सॉरी,
वाई एबल का जो वाई है प्रोडक्ट वो सिर्फ बेकर खरीदता है. Baker supplies an external market and can obtain its semi-finished supplies of product Y from either able or an external source. So Baker can purchase from either Y, that is able, or from an external source. If they are buying it from the external source, the external person payment is $38 per unit. The capacity of division able is measured in units of outputs, irrespective of whether product X, Y, or both are being manufactured. The association product cost are as follows. Variable cost हो गया 32 plus 5 for X and 35 plus 5 for Y. Right? So total unit cost X का हुआ 37 and Y का हुआ 40. हमको क्या करना है यहाँ पे? Using the information, provide advice to on the determination of a appropriate transfer price for the sale of product Y from division able to division baker under the following conditions. क्या करना है आपको? एडवाइस देनी है. एडवाइस क्या हो गया? थ्योरी हो गया, right? When division able has spare capacity and limited external demand of X, right? ये जो लास्ट लाइन है ना, ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. I'll repeat it. Capacity of division able is measured in units of output. That means able has got a certain capacity that it can make. अब वो उसमें से x बनाए y बनाए या दोनों बनाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर टोटल कैपेसिटी है. When division able has spare capacity and limited external demand for product X, मतलब Y वो बेकर को बिल्कुल बेच सकता है. Y का वैल्यू क्या है? 35, राइट? अगर बेकर खरीदता है Y फ्रॉम एबल तो वैल्यू है $35. लेकिन अगर बेकर खरीदता है एक्सटर्नली तो वैल्यू है $38, राइट? नाउ हियर बिकॉज स्पेयर कैपेसिटी है तो आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो. आप क्या करोगे? आप बेकर से लोगे. बेकर सॉरी एबल से लेगा क्योंकि वो एक्सटर्नल से चीपर है, राइट? सो फर्स्ट थिंग तो हमारा श्योर है 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है उसके लिए कि बेकर कैन परचेज फ्रॉम एबल एट व्हाट प्राइस? एनी प्राइस above 35 and below 38, राइट? अगर 38 पे ले रहा है तो एक्सटर्नल भी वही देगा, राइट? तो उसको इंटरनल लेने से कोई तो फायदा होना चाहिए. सो 35 plus any amount. Now this amount should be enough to fulfill for the fixed cost plus motivate the employees who produce unit, so who produce Abel's product Y. आपको एडवाइस करना है, राइट? तो जब आप एडवाइस कर रहे हो तो आपको अच्छे से एडवाइस करना है कि फर्स्ट थिंग इज बेकर को इंटरनली मिल रहा है 35 में, एक्सटर्नली मिल रहा है 38 में, राइट? सो डेफिनेटली 35 इज चीपर. सो बेकर अगर प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो उसको एक्सटर्नल ही परचेज करना चाहिए. दैट इज वन थिंग. दूसरी बात, क्या प्राइस पे परचेज करना चाहिए? तो एनीथिंग विच इज मोर देन $35, लेस देन $38 शुड बी टेकन. And the third thing here is Y, product Y is also having a fixed cost.
So there should be a certain amount that makes up for the fixed cost also, right? And should also be enough to motivate the employees who are producing product Y in division able, right? So for 3 marks, this is how you write, and this is a situation of spare capacity, right? Spare capacity, this is the situation. Let's go to the next one. Again, advice कर रहे हैं. When division able is operating at full capacity with unsatisfied external demand for product X. Full capacity. Full capacity में क्या होता है? Marginal cost plus opportunity cost, right? Marginal cost कितना है जो हम पे करते हैं? 35. Opportunity cost कितना है? एबल अगर X को बाहर बेचता है तो $42 मिलता है, जिसमें से $32 का मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो $10 हुआ, प्लस Y का $35. That means $45 is the value at which Able can sell to Baker, right? अब इसमें एडवाइस आ गया. फर्स्ट थिंग इज बेकर को चीप पड़ेगा. बेकर गेट्स cheaper material from external supplier. That is the first thing, right? Second thing is that if Baker purchases in-house, it will give a loss of customers of product X of Able. And sometimes it's not good to lose your customers, right? So 4 marks ka hai. This is how you talk. You talk about full capacity situations, talk about opportunity cost, talk about the cost at which they would sell, and then give your advices, right? Last question. Design. The design of an information system to support decision making in transfer pricing necessitates the inclusion of specific data. Identify the data that needs to be collected and how it may be used. It is a simple question, but in a very tricky language, which only asks you कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग फाइंड आउट करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या डेटा चाहिए आपको. तो जब हम ऊपर ये वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे तो हमको क्या चाहिए था? हमको वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, हमको सेल्स प्राइस चाहिए, हमको क्वांटिटी चाहिए, हमको एक्सटर्नल सेल्स प्राइस चाहिए, या फिर कॉस्ट प्राइस चाहिए, राइट? सो दीज आर द बेसिक डेटा दैट यू रिक्वायर, राइट? वही यहाँ पे पूछ रहा है, वही हमको आंसर करना है. वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स प्राइस, कैपेसिटी, लिमिटिंग फैक्टर यहीं पे अपने बी वाले क्वेश्चन में भी था कि एबल कैन प्रोड्यूस अ सर्टेन कैपेसिटी ऑफ बोथ, राइट? लिमिटिंग फैक्टर्स, shadow price if any, and availability of pricing from the external suppliers. So you need all these things to make sure that you can calculate the transfer price. Topic 2, divisional performance evaluation. What was divisional performance evaluation? Divisional performance evaluation basically talks about the fact that the department heads cannot be made responsible for all the variances, expenses, or all the losses
that are not in their hands. In short, divisional managers can only be responsible for the controllable profits and controllable incomes, controllable expenses, right? उसको बोलते हैं divisional performance evaluation, जहाँ पे controllable value हम use करते हैं. अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? Pace company, PC, runs a large number of wholesale stores and is increasing the number of these stores all the time. It measures the performance of each store on the basis of a target return on investment of 15%. Store managers get a bonus of 10% of their salary if the store's annual ROI exceeds the target each year. एक बिजनेस है पीसी करके, राइट, जिसका आरओआई, टारगेट आरओआई है 15%, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है बोनस ऑफ स्टोर मैनेजर विच इज 10%. दैट मीन्स अगर एक स्टोर मैनेजर 15% या उससे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनाता है, तब जाके उसको अपनी सैलरी के ऊपर 10% बोनस मिलेगा. Once a store is built, there is very little further capital expenditure until a full 4 years have passed. PC has a store W, in the west of the country. Store W has historic financial data as follows over the past 4 years: 18, 19, 20, and 21. So the sales are 200, 200, 180, and 170. Gross profit 80, 70, 63, and 51. Net profit 13, 14, 10, and 8. Net assets at the start of the year 100, 80, 60, and 40. That means it is deteriorating. The market in which PC operates has been growing steadily. Typically, PC stores generate 40% gross profit margin. अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे क्या लिखा है, वो है दिस पार्ट ऑफ द सिनेरियो रिलेट्स टू योर रिक्वायरमेंट बी. मतलब अगर मुझे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है तो मैं अपना क्वेश्चन ए देखूं, उसका आंसर बताऊं और वो वाला क्वेश्चन का चैप्टर वहीं फिनिश करूं. उसके बाद में मैं रिक्वायरमेंट 2 या रिक्वायरमेंट बी की सिनेरियो को पढूं. सो व्हाट डज इट से? डिस्कस द पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस of store W using ROI and any other measures you feel appropriate. Using your findings, discuss whether the ROI correctly reflects W's actual performance or not. मतलब ये जो 8 मार्क है, इसमें आपको 3 चीजें करनी है, राइट? एक तो आपको कैलकुलेशन करना है बिकॉज आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइंड करनी है. उसके बाद आपको डिस्कस करना है एंड उसके बाद डिस्कस करना है ऑन दिस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड उसके बाद डिस्कस करना है वेदर द आरओआई इज करेक्टली रिफ्लेक्टिंग द W's actual performance or not. राइट? सो 3 चीजें करनी है 8 मार्क के लिए. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिर्फ इतनी ही डिटेल है. तो सेंसिबली अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइंड आउट कर रहे हो तो आप कौन से रेशियोज फाइंड आउट कर पाओगे यहाँ से, राइट? मैं यहाँ पे जीपीएम कैलकुलेट कर सकती हूँ, एनपीएम कैलकुलेट कर सकती हूँ, आरओआई कैलकुलेट कर सकती हूँ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैलकुलेट कर सकती हूँ, राइट? सो दीज आर टेक्निकली द 4 थिंग्स दैट आई कैन फिगर आउट. आरओआई 13 upon 100, 14 upon 80, 10 upon 60, 8 upon 40, राइट? सिमिलरली अगर ग्रॉस प्रॉफिट करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू डिवाइड बाय सेल्स, सेम एवरी ईयर. नेट प्रॉफिट के लिए नेट प्रॉफिट का वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स, राइट? सो दिस इज अ ईयर ऑन ईयर थिंग दैट वी विल बी एबल टू डू.
उससे हम अपने रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। इन्होंने क्या किया है, आरओआई किया है, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ओवरहेड्स भी फाइंड आउट किए हैं। वेल मुझे स्ट्राइक नहीं हुए तो मैंने नहीं किए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें 2 मार्क्स का कैलकुलेशन, 3 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन एंड 2 मार्क्स का वो आरओआई का डिस्कशन है। सो आई थिंक whatever comes to my mind and if I do it, I don't think I should have any trouble there. Right? ROI 13%, 17.5, 16.7 and 20% दिखा रहा है, right? जबकि year on year growth नहीं है, in fact, the sales are deteriorating. Gross profit margin is only 1 year where it meets the company's expectations. Rest of the years it is reduced. Net profit has jumped little bit in 2019 and then after it has overall reduced, right? सो बिकॉज आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख के उसको एनालाइज करना है, उसको डिस्कस करना है, आप वही करोगे यहाँ पे। आप देखोगे, एनालाइज करोगे एंड डिस्कस करोगे, राइट? सो सेल्स ग्रोथ, ग्रॉस मार्जिन, एनालाइज करो, डिस्कस करो। व्हाट पॉइंटर्स दे हैव पुट हियर? Revenue growth is most unimpressive. The market in which PC operates is steadily growing, and yet store W has shrunk in the terms of sales over the last 4 years, which we can see. Like year on year, अगर देखो company revenue इतना नहीं बना रही है. This could be poor volumes or poor prices achieved. Given the reducing gross margin, a falling sales price is likely. It is possible that W is subject to higher than normal levels of competition. नेक्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर ही उसने अपने कंपनी स्टैंडर्ड्स फॉलो किया है, विच इज 40%। बाकी years it is deteriorating. Gross profit margin has also shrunk. Reducing margins can result from sales price pressure or increase in the cost of sales levels being incurred. Suppliers might have increased prices or labor could have become more expensive because gross profit में cost of sales होता है, direct cost होता है, right? So direct cost में क्या चीजें mostly आती है? एक तो raw material आता है, एक तो labor आता है। दोनों का price अगर बढ़ गया होगा तो definitely gross profit margin reduce हो जाता है. The level of margin has only reached the normal level once in the last 4 years and clearly W is underperforming. Next is net margin, which has also fallen, primarily due to falling gross margins as overheads have reduced. Clearly, this is as a disappointing performance. And return on investment has improved in most years and has exceeded the 15% target in all but 1 year in 2008. This is simply due to the reducing assets of the stores and this normally happens because the assets are depreciating. तो ओवरऑल अपना नेट एसेट्स कम होता जाता है एंड आपको लगता है कि कंपनी की प्रॉफिट बढ़ गई है, बट दैट इज नॉट द सिचुएशन, राइट? मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। अगर आप नोटिस करो तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है, ठीक है, सिर्फ 2019 में इंक्रीज हुआ है, बाकी रिड्यूस रिड्यूस हुआ है, राइट? सिमिलरली नेट एसेट्स रिड्यूस 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 हुए हैं, राइट? सो क्या हो जाता है आपको ये वैल्यूज देख के, अगर आप आरओआई से इसको कंपेयर करो तो ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट ईयर में ही आरओआई अचीव नहीं हुआ है एंड बाकी सारे ईयर्स में हुआ है। बट ये आरओआई के इंक्रीज का रीजन is not because the profits have increased, is because the net assets have deteriorated, right? लॉजिक सिंपल है, जब भी आप आरओआई फाइंड आउट करते हो, इट इज प्रॉफिट अपॉन नेट एसेट्स, राइट? If your numerator is higher or your denominator is lower, that is where ROI will be high, right? And hence, this is how it shows, right?
That is what it is written for ROI also. ROI has improved in most years and has exceeded the 15% target in all but one year, which was 2018. This is simply due to the reducing asset base as the store's assets have gradually been depreciated. Net profit levels have fallen overall, and yet ROI has increased. It is hard to argue that ROI figures properly reflect the performance of the store. The ROI will tend to increase as the assets get older, and this will distort the financial performance picture. In a period of falling sales and weaker margins, the manager of W has been awarded bonuses in 3 out of 4 years, and this is hard to justify because अगर सिर्फ ROI के डिपेंडेंस पे मैनेजर्स को बोनस मिल रहा है विदाउट इवन इन्वेस्टिगेटिंग कि भाई प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, जीपीएम रिड्यूस हो रहा है, एनपीएम रिड्यूस हो रहा है, आरओआई कैसे बढ़ रहा है, then that is very wrong from the company's point of view because they are failing to understand such a simple increase in the return of investments. Let's go to the next question. 8 मार्क का क्वेश्चन था, राइट? अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे. In respect of store S, calculate, बोल दिया क्या क्या करना है. Revenue, gross profit, net profit, ROI for the 4 years. 8 मार्क का क्वेश्चन है, 4 चीजें फाइंड आउट करनी है, 2-2 मार्क का एक कैलकुलेशन. राइट, सिनेरियो बी के लिए है, सो हम वही देखेंगे फिर. PC has another store S, about to open in the south of the country, for which the following information is provided. Sales in the first year will be 18,000 units. Sales volume will grow 10% for first 2 and 3 years, but no further growth is expected in the fourth year. मतलब year 1 में 18,000, year 2 में 18,000 into 1.1, फिर जो भी वैल्यू आएगा ईयर 3 में वो वैल्यू लेके इस पे 1.1, राइट, एंड ईयर 4 में ये वैल्यू रहता है स्टेबल. सो दिस इज योर सेल्स यूनिट्स, राइट. इसके बाद क्या बोला गया है? सेल्स प्राइस विल स्टार्ट विद $12 फॉर द फर्स्ट 2 years एंड देन रिड्यूस बाय 5%. मतलब ईयर 1 में सेल्स प्राइस पर यूनिट $12, ईयर 2 में $12, ईयर 3 में $12 का 95% जो आता है वो, एंड ईयर 4 में वो वैल्यू का भी 95% जो आता है वो, राइट. Gross profit will be charged at 40% but will reduce as the sales price reduces, right. सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना? रेवेन्यू. सेल्स पर यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा, सेल्स प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर रेवेन्यू. Second is what? Gross profit. Gross profit will start at 40% but will reduce as the sales price reduces, right? And all purchase price on the goods of resale will remain constant for the next 4 years, right? So gross profit reduce होगा depending upon the sales price. See, ये जो मैंने आपको बताया था, right? You get your first year's का revenue कहाँ गया? हाँ, right? First year, second year, third year, fourth year constant. Sales price first 2 years का constant. फिर 95% पे नेक्स्ट 2 years का मल्टीप्लाई करो, आपका रेवेन्यू आपको मिल जाएगा. सेकेंड है ग्रॉस प्रॉफिट, पहले 2 साल का है 40%, राइट, 40% एंड 40%. उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है ना. ये वाली जो मेथड है ना, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, मैं आपको सिंपलर मेथड बताती हूँ, राइट. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट. सेल्स रेवेन्यू आपको दी गई है, यूनिट्स भी दिए गए हैं, राइट. वेरिएबल कॉस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो. फर्स्ट 4 years, फर्स्ट 2 years का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है विच इज 40%, राइट. तो इससे आप वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करो जो आ जाती है 7.2.
एक बार वेरिएबल कॉस्ट आ गई तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट योर ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? सो अगर आपको फॉर एग्जांपल ईयर 3, अगर ईयर 3 का आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? 237,600 माइनस 19,800 इंटू 7.2 क्या आता है देख लेते हैं। 19,800 into 7.2, right, which comes to 142,560. So 237600 minus 142,560 comes to your value 95040, which is this value, right? दूसरा फाइंड आउट कर लेते हैं। 248292 माइनस नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है? 21780 into our 7.2, right? So how much does that come to? 21780 into 7.2 gives you 156816. 248292 minus 156816, right? So that comes to 91476. 91476, राइट? सो आप ग्रॉस प्रॉफिट वैसे फाइंड आउट कर सकते हो। दो चीजें हो गई, रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए वी हैव मोर इंफॉर्मेशन। Overheads including depreciation are 70,000 for the first 2 years and 80,000 for the next 2 years. Store requires an investment of 100,000 and depreciation of NCA is at 25% on cost. राइट? सो नेट प्रॉफिट के लिए हमारे पास ओवरहेड्स हैं जो हम माइनस कर देंगे फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। 70 फॉर फर्स्ट 2 years, 80 फॉर द नेक्स्ट 2 years, राइट? इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, वो 25% पे डिविडेंड होता है, राइट? यू कैन फाइंड योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट which is 16400 divided by 100,000, 25040 divided by 75,000, and so on, right? So you'll get your return on investment. Easy peasy 8 marks. You can get it like this. Next question. Calculate the minimum sales volume required in year 4 to earn the manager S a bonus in that year. बोनस लेने के लिए कितना होना चाहिए था? वैल्यू 15%, राइट? सो वी हैव गॉट अ ईयर 4 का नेट प्रॉफिट विच इज 25,000। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे। 25,000 का 15% कितना आता है? 3750। उसके अंदर हम ओवरहेड्स ऐड करेंगे 80,000, राइट? एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 33,518 बिकॉज वो हमने पहले फाइंड आउट किया था, right? So this implies to 249,866. You divide it with the price, which is also something that we have found out. See, here it is, right? You will eventually get the number of units, which is 23072. All it says is कि अगर मैनेजर को 15% ROI चाहिए तो उनको 23,072 पर यूनिट पे स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? And the last topic for explanation is planning and operational variance. What was planning and operational variance? उसका एक quick review ले लेते हैं। Planning and operational variance was जहाँ पे कभी कभी standard budgets बनने के बाद अगर कंपनी के वेरिएंसेस आते हैं तो वो कैसे हैंडल होते हैं, राइट? Operational variances are something for which the managers are responsible. Planning variances are something for which managers are not responsible because they are not in their hands. And under any circumstances, having your human resource being safeguarded to make sure that they are not being exploited, they are not being held responsible for something that is not their fault,
is completely acceptable, right? So this is where the planning and operational variance logic sticks. Let's take a 5 minutes break and then we will do a question based on BEDCO.
I am back again. Let's do this last question, planning and operational variance का. जैसे मैंने explain किया, operational variance एक कंपनी के मैनेजर को responsible definitely ठहराता है, because जो भी operations में changes आते हैं, variations आते हैं, वो कहीं ना कहीं मैनेजर्स की गलती होती है या फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है. लेकिन अगर प्लानिंग में वेरिएंसेस आते हैं तो उनमें मैनेजर्स कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर मोस्टली फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इसीलिए उनका, मैनेजर्स का आई मीन, ज्यादा यहाँ पे रोल नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन कॉल्ड बेड को. Bedco manufactures children's bed sheets and pillowcases, which it supplies to a major furnishing retailers. It uses a just-in-time system and holds no inventories. The standard cost for the cotton, which is used to make the bed sheets and pillowcases, is $5 per square meter. थोड़े numbers हैं, लिख के करेंगे better रहेगा. Standard cost दिया हुआ है $5 per square meter. Each bedsheet uses 2 meters of cotton and pillowcase uses 0.5. Standard price दिया हुआ है, usage दिया हुआ है. Production levels for bedsheet and pillowcase for November are as follows. Budgeted was bedsheets 1,20,000 units, pillowcases 1,90,000 units, actual bedsheets 1,20,000 units, pillowcases 1,80,000 units. The actual cost of the cotton in November is 5.80 square meters. 248,000 square meter of cotton was used to make the bed sheets and 95,000 square meter of cotton was used to make the pillowcases. So these are your actual figures and your actual cost. And ऊपर जो है, यहाँ पे जो है, ये आपका standard है. The world commodity prices for cotton increases by 20% in the month of November. अब आया uncontrollable circumstance. At the beginning of the month, the furnishing retailer made an unexpected request for an immediate design change to the pillowcase. The new design requires 10% more cotton than previously. It also resulted in production delays and therefore a shortfall in the production by 10,000 pillowcases in total that month. दो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिससे कंपनी कुछ ज्यादा कर नहीं सकती इसके बारे में. एक तो ओवरऑल कॉटन का प्राइस इंक्रीज हुआ है 20%. दूसरा यूसेज फॉर पिलो केस 10% इंक्रीज हो गया है, राइट. एंड ऑल्सो 10,000 पिलो केसेस का डिले, राइट. The production manager at Bedco is responsible for all buying and any production issues which occur, although he is not responsible for setting a standard cost. What are we supposed to find for 12 marks? Material price planning variance, material price operational variance, material usage planning variance, and operational variance. Right? Price planning, price operational, usage planning, usage operational. Let's look at this first. Price planning, standard minus revised. रिवाइज कितना हुआ था, कॉटन का कॉस्ट बड़ा बड़ा 20%, राइट. सो 5 का 20% इज इक्वल टू $1. दैट मीन्स रिवाइज्ड क्या हो गया, $5 प्लस $1, $6, राइट. एंड एक्चुअल क्वांटिटी यूज हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 2,48,000 स्क्वायर मीटर्स. सो हमने बस वही से मल्टीप्लाई करा. इट इज एन एडवर्स. So is for the pillowcases. So there is a total adverse of 3,43,000. Planning variance है, definitely the manager is not responsible because cotton का price is an external factor. Company का इससे कोई लेना देना नहीं है. Second is price operational variance.
Revised minus actual price into actual quantity. Revised price हमने अभी find out करा. Actual price is given in the question, which is 5.80. Actual quantity is also given, right? So यहाँ पे हमारा favorable बनता है 68,600 and operational है मतलब it is something which is where the managers are responsible and it is a favorable value. Usage, standard quantity for actual production minus revised quantity for actual production. Standard quantity for actual production is given. अगर हम बेडशीट्स की बात करें तो 2 है, बजट और एक्चुअल प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है. दैट मीन्स अगर आपको उसका यूजेज का प्लानिंग वेरिएंस फाइंड आउट करना है बेडशीट्स का, तो 0, राइट? पिलो केसेस का यस देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज 0.5 आपको लगता है, राइट? एंड आपका प्रोडक्शन इज कहाँ गया, हाँ, राइट? सो यू हैव मेड 1,80,000 was your expected, right? And 0.5, that means this 90,000, 1,80,000 you're budgeted at a budgeted usage, right? Actual usage आपने कितना किया, 1,90,000 at 0.55. Sorry, 1,80,000 at 0.55. 0.55 कैसे हो गया? जो न्यू क्लॉथ पिलो केस की डिजाइन थी उसमें 10% एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल या कॉटन गया, राइट? सो 0.5 जो था उसको 1.1 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट बिकम्स 0.55 स्क्वायर meters, right? So this comes to 1,80,000 into 0.55, that is a 45,000 ka adverse, right? You can also do it as 0.005 into $5 multiplied by 1,80,000, right? So this comes to an adverse. And last है material usage, operational. इसमें definitely managers can't be responsible. Actual quantity given in the question, revised quantity for actual product into standard price. 1,20,000 bed sheets बनाई है actually and value क्या होनी चाहिए थी, 2 square meter, right? So 2,40,000 होना चाहिए था into $5. So that comes to 40,000 adverse. Pillow cases, actual quantity कितनी यूज हुई है, 95,000 minus 99,000 into 5, giving you a favorable of 20,000. That means the total adverse operational is $20,000. एक बार फॉर्मूला समझ में आ जाए जो हमने कल करी थी तो आई डोंट थिंक ये कैलकुलेशंस करने में दिक्कत आती है, मिस्टेक्स होती है, राइट? इसका एक थ्योरी पार्ट भी है that we have to understand and we have to write, which is assess the performance of the production manager for the month of November in respect of the variances calculated. Performance of the production manager for the month of November. Now, operational price variance is favorable, which for which the manager can be held responsible. And operational usage variance is adverse, for which also the manager can be responsible. In total, there has been an overspend of 339,400. कैसे find out हुआ? सारे adverse और so ये दो adverse है, right? 45,000 plus 20,000 कर दिया आपने, plus 3,43,000 कर दो, minus 68,600 करो, you will get your value, which is 339,400, which looks poor. However, when the reason for this are examined,
together with the variance calculated, it is apparent that the production manager cannot be held solely responsible for the overspend, right? We can talk about the increase in the cotton price that has increased by 20%, right? Still, when we look at the price variance, operational variance, it is favorable. That means revised price was $6, but the manager could use the actual cost as 5.80. So they already saved money there, right? Increase in the amount of cotton was not something which was in the hand of the managers also, right? Because there was a change in the design that changed. Since more cotton was used for actual production than budgeted, a total adverse material usage variance of 65,000 arose. However, of this, 45,000 arose because of the request for a change in the design. So that is not where the manager should be responsible. This is not within the control of the production manager, and his performance should not be assessed by this. However, an adverse material usage operational variance of $20,000 also rose, and the performance of the production manager is weak here. Most of the adverse operational variance actually related to the production of bed sheets rather than pillowcases. It is not clear why this arose, but it is definitely poor. Bed Company was unable to produce the pillowcases ordered to its customers in November, as the order fell short by 10,000 units. If it was genuinely because of the late design change, however, it seems unfair to judge the production manager on this also, right? So अगर हम जिस पे प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं विच इज द ऑपरेशनल वेरिएंस, उसमें अगर प्राइस देखें तो ऑब्वियसली दे हैड प्रोडक्शन मैनेजर हैज शोन अ फेवरेबल रिजल्ट. यूसेज में yes they have shown a negative result, but overall अगर कंपेयर करो तो it is a positive result. दूसरा अगर आप नोटिस करो तो कंपनी हैज गॉट 10,000 units which it could not give to its customers. That can be a reason because the company got the designs pretty late, right? So this can be the reason why the company got delayed, or why the company could not sell its 10,000 units, send its or deliver its 10,000 units, right? So this brings us to the end of these three questions, and YouTube रिविजन के सेकेंड डे का भी एंड आ गया है इसमें. हमने क्या करा, आज क्या किया था, कल कल हमने एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लिया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, बिकॉज सी ये यूट्यूब रिविजन्स है, इनमें सारा फिनिश अप करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. ऑब्वियसली हमारे जो क्लासेस चलते हैं आईआईसी लक्ष्या के साथ, उसमें हम 50-60 आवर्स का प्लान आउट करके ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के क्लासेस होते हैं, राइट? But definitely whatever value we can add, we should be adding to you. That is utmost important, right? And then we looked into three very important topics जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो है ट्रांसफर प्राइसिंग, डिविजनल परफॉर्मेंस, एंड ऑब्वियसली लास्टली द ऑपरेशनल एंड प्लानिंग वेरिएंस. इनकी थियोरी के बिगर ये क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है, यू कुड से, राइट? सो इनकी थियोरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने बताया, थियोरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन यू हैव टू यूज द करेक्ट स्पॉट्स, you have to use the correct pointers to make sure that you are writing the answers in a right format, right? So theory definitely important for transfer pricing, divisional performance, and obviously the planning and operational variance. Because under all these three of them, आपको justify करना पड़ेगा कि आपने क्यों वो value select किया है, right? Yesterday was the theory explanation of them, and today we picked up one question from each one of them to explain the theory that was explained yesterday, right? ये सारी अगर आप तीनों क्वेश्चंस देखो तो ये मिक्स है थियोरी और कैलकुलेटिव्स के. So when you mix things together, that is where the better outcome for that is expected, right? So
This brings us officially to the end of the second day of YouTube revision. कल हमारा लास्ट यूट्यूब का रिविजन है एंड अगर आप हमको फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंटली सिंस 2 days, कल हम सैम्पल पेपर 100 मार्क का सैम्पल पेपर आपके साथ सॉल्व करेंगे, राइट? सो दैट डज नॉट मीन कि मैं पूरा आंसर टाइप करूंगी जैसे मैंने आज आंसर्स डिकोड करे हैं. Same strategy I'm going to use it tomorrow and make sure that we finish it in time, right? There are chances कि मैं आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं दिखा पाऊँ, but yeah, definitely I can show you because I'm going to write it down with my pen tablet on the paper itself, ताकि आपको एक आइडिया है कि आपको एक्सेल शीट पे क्या करना है, right? And of course, जो थ्योरी पार्ट है सेक्शन ए बी एंड सी की, तो ए एंड बी में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी के. सो आई शो यू हाउ टू यूज द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, कौन से कैसे एलिमिनेट करने हैं ताकि हमको राइट थ्योरी का आंसर मिले, क्योंकि कभी कभी थ्योरी के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा ट्रिकी होते हैं, राइट? एंड आफ्टर दैट वी विल बी एंडिंग द यूट्यूब सेशंस फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. So, as of today, that is all. I will see you tomorrow at, for Hindi, it is 2 p.m., right? 8th November, 2 p.m. Indian Standard Time. So please join in and take the benefits. Thank you so much.